hello everyone. Welcome to the third, I should say, edition of this podcast. So अब तक जो भी बातें हो रही थी काफी सीरियस टॉपिक्स पे थी, फाइनेंशियल फ्रीडम एंड हैप्पीनेस एंड सम फिलोसफी स्प्रिंकल्ड हियर एंड देयर. सो थोड़ा अभी चेंज करके लाइट चीजों के बारे में बात करते हैं. So let's stay with things that are relatable to us. Let's stay with things that are a little bit light-hearted. So let's talk about travel. मतलब ट्रैवल के बारे में जब भी बात करेंगे, एवरीबडी हैज अ डिफरेंट पिक्चर इन फ्रंट ऑफ देम. किसी को बीचेस पसंद आते हैं, किसी को माउंटेन्स पसंद आते हैं, किसी को इंस्टाग्राम के लाइक्स पसंद आते हैं. सो एवरीबडी हैज अ डिफरेंट आउटलुक टू इट. सो तो वही डिस्कसिंग व्हाट ट्रैवल मीन्स टू all of us and essentially what it brings us, what it brings in our life. Okay, so let's start with one familiar place. श्री वल्लभ, कहाँ ट्रैवल पसंद करना पसंद है आपको? सो हमें तो बीचेस के ऊपर बात करना पसंद है बहुत. और उसका बहुत रीजन ये है कि बचपन से घर वाले बहुत ट्रैक पे लेके गए हैं. समुंदर के आगे कुछ दिखता ही नहीं है. एंड आई थिंक अनदर थिंग इज कामनेस, जिसको बोल सकते हैं कि बहुत शांत लगता है वहां पे. वेव्स आती रहती है और वो ऐसा आती रहती है कंटिन्यूस. यू डोंट हैव टू, आई मीन कोई कुछ को रेगुलेट नहीं कर रहा. नेचर का पावर एट इट्स बेस्ट है वहां पे. तो बस ओके. सो डिस्क्लेमर ये है कि मेरे को स्विमिंग बिल्कुल नहीं आता. और अमावस्या के दिन जन्म है मेरा. अमावस्या इज फॉर इंग्लिश वेयर नो मून इज देयर. तो उसमें मेरे घर वालों ने मेरे को बचपन से पता कर रखा है कि पानी से दूर रहे. तो मैं बोला यार ये चैलेंज चाहिए. तो बीचेस गया मैं जब पहले बार, तो बहुत छोटा था. मुंबई जुहू चौपाटी जस्ट लाइक एवरीबडी. और वहां से शुरू होकर और जाते बीचेस पे तब आया जब बड़े हो गए, लाइक पोस्ट 20 ईयर्स जब वो ट्रैवल किया. तो आई जस्ट फेल्ट ऑल दीज थिंग्स जो मैंने बताया. वास्टनेस ऑफ सी, कामनेस. खुले अगर पैसे बचे तो बाहर के भी बीचेस घूमूंगा. तो विद दैट या बीचेस का इंट्रोडक्शन इज डन. तो वास्टनेस का आइडिया तुझे मतलब नाइट स्काई को देख के भी आ सकता है ना? आई मीन, और नहीं इज यार, दैट नॉट मजा रिलेटेबल? मजा नहीं आता. लाइक हाँ, स्टार्स है, अच्छी बात है. बट वो स्टार्स पे जाएगा कौन? लाइक अभी तक अपन चंद्र पे, चांद पे ज्यादा जा नहीं पाए. वो बंद कर दिया अपन 1979 में. समुद्र कैसा गोवा में है, एक फ्लाइट लिया कि पहुंच जाते हैं. तो वो आता रहता पानी. वो बढ़िया, तो निकिता के पीछे भी आ रहा. तो वो विसिनिटी भी एक पॉइंट है ना. यू कैनॉट रीच द स्टार्स एज ऑफ येट. मे बी आज से 100 साल बाद, 200 साल बाद लोग बोलेंगे कि हाँ यार मेरे को मार्स बहुत पसंद है ट्रैवल के लिए. बट फिलहाल के लिए आई वुड से कि हाँ, गोवा और गोकर्णा और एंटायर वेस्टर्न कोस्ट या ईस्टर्न कोस्ट, एनीवेयर देयर इज सी, इट्स गुड. सो या दैट्स माय जस्टिफिकेशन फॉर सी. इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग. बीचेस या क्रूजेस भी चलेगा? एनीथिंग टू डू विद सी या जस्ट बीचेस? क्रूज पे मैं 3 बार गया हूँ. तो अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे हिसाब से. वो एक एक्सपीरियंस, मेरे पर्सनल ओपिनियन ये है कि एज एन एक्सपीरियंस है ये कि एक शिप जो ह्यूमन टेक्नोलॉजी मार्वल है जो तैर रहा है, और तुम वहां पे 5,000 रुपए हार रहे हो कसिनो में. तो दैट इज अ डिफरेंट, क्या बोलते हैं, एक्सपीरियंस. बट हाँ, मोर लाइक बीचेस, वेरी पैशनेट अबाउट बीचेस. सो या. इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग. फॉर मी, मुझे बीचेस का तो हमेशा ऐसा वियर्ड लगता था, क्योंकि बचपन में स्विमिंग सीखने का ट्राई किया बट आई हैड टू लीव इट हाफ वे. तो अभी पानी का डर है मेरे लिए. सो एनी टाइम आई गो टू अ बीच, इट्स जस्ट इनएडिक्वेट. मतलब पानी पास में है बट तैरने जा नहीं सकते, काइंड ऑफ फील आता है मुझे. सो सो या, आई मीन, फॉर मी बीचेस इज नॉट समथिंग. आई लाइक टू जस्ट सिट एंड रिलैक्स, बट आई डोंट थिंक आई कैन एंजॉय देम फुल्ली. What do you prefer then? आई मीन, फॉर मी आई लाइक टू गो टू न्यू प्लेसेस. ऐसा बहुत फिक्स नहीं रहता. एज लॉन्ग एज इट्स अ न्यू प्लेस, आई एम फाइन. अभी मैं 7-8 साल से यूएस में रह रहा हूँ, बहुत यूएस घुमा हूँ. और यूएस में भी मिडवेस्ट में रहा हूँ. सो जो बैरन एरिया है, काइंड ऑफ नथिंग टूरिस्टी एंड एवरीथिंग, वहां पे भी घूमना पसंद है मुझे, एज लॉन्ग एज इट्स अ न्यू प्लेस. तो जब भी ऐसा, फर्स्ट टाइम जब यूएस में आया था, तब मेरा ट्रैवल गोल ये था कि 50 के 50 स्टेट्स में जाके आना है एक बार. लाइक सेट योर फुट इन ऑल 50 स्टेट्स एटलीस्ट. तो उस लाइन पे मतलब आई हैव बीन टू स्टेट्स जो बहुत बोरिंग है, मतलब कुछ भी नहीं रहेगा वहां पे. सो पीपल हु हैव बीन टू यूएस नो विच स्टेट्स आई एम टॉकिंग अबाउट. बट मैं रहता भी हूँ, रहा भी हूँ काफी ऐसे स्टेट्स में. सो
in that particular case, even if I'm sort of going through traveling on a road or आजू बाजू कुछ नहीं है, that is also fine with me as long as I'm just exploring. So yeah, beaches, mountains. So I'm the sort of again the diplomatic neutral guy who has no preferences anywhere. So but don't you feel like beaches makes you overthink about yourself? Like Maldives, you just actually mentioned, right? Beaches makes you feel insignificant because it's so large and then there's just waves coming in. I have been in a few beaches with you when we all have hung out. So I'm just saying, it gets you into a different zone of your life where you don't want to overthink about a lot of things. And especially when your days are bad, I don't think beaches is a place, at least for me. Yeah. So how do you deal with ये that? पर्सनल एक्सपीरियंस मुझे सुनना है बाय द वे नंदिता. आई मीन क्या हो जाता है वल्लभ को बीचेस पे जाकर, मतलब would like to know Not from so your good days perspective. or not so good days. नहीं, for everyone. सीक्रेट्स बताने की जरूरत नहीं, जस्ट सम पर्सनल स्टोरीज आई गेस. हाँ. So नंदिता का इंट्रोडक्शन दे देंगे पहले. नंदिता इज द फर्स्ट non-VNITian on the podcast. Nandita, welcome from SIBM represent. So निकिता I want है, to cry. निकिता हमारी Like, junior है. thank you. आंसू रुक नहीं रहे. But निकिता हमारी जूनियर है, 2015 VNIT बैच, करंटली इन यूनाइटेड स्टेट्स. तो ये इंट्रोडक्शन के साथ मैं आंसर देना चाहूंगा क्वेश्चन का. I would contradict this point कि on the not so good days you want beaches more. I mean, I'll give you the example of my birthday. So 30th birthday का मेरा अभी 30th birthday हुआ था. So बहुत चल रहा था कि last 2 birthdays were in lockdown and they were all on Zoom. श्रेयस जोशी जो हमारे पीछे बैठे हैं उन्होंने Zoom कॉल ऑर्गेनाइज किए थे, 20-20, 30-30 लोग. So my birthdays were always like a big thing. People used to come, party होता था and वो सब. But then 2 साल हुए, बर्थडे हुआ नहीं जैसा चाहिए था. So it was not a very good feeling कि हाँ यार अभी have I reached that age where birthday should not be celebrated. And then I decided कि नहीं, मेरा लाइफ है और मुझे जाना है. तो मैं गोवा चला गया और मैंने 30th बर्थडे गोवा में सेलिब्रेट किया था और मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ. The happiness that you get कि you are here and the sea is there and you at 11:59 the world on your birthday, the 11:59 p.m. the world is X. At 12 you feel at top of the world, एकदम Leonardo DiCaprio वाला. Or at 12:01 it is again the same, like the sea is still, the waves are still coming there. So कुछ बदला नहीं है लाइफ में तुम्हारे वजह से, ना तुम्हारे बर्थडे से, ना तुम्हारे उससे. तो I feel on the bad days you need beaches more. Yeah, that's what I like. It's a means of happiness. जो अपना topic है कि travel as a means of happiness. So for me, going to beaches is that happiness. Like you feel happy, you feel like you have left something behind. The calmness of it is with you. So, but हाँ नंदिता, अपन बीचेस पे बहुत कम गए हैं. अपन मुंबई पे गए. तेरे को बाकी कुछ बोलना है तो बोल. मुंबई के बीचेस को बीचेस नहीं बोलेंगे. Yeah. Okay, I contradict that. I start to feel that when you go to beaches, it makes you overthink about life because it's just so peaceful. Like what he said, everything that you're thinking in the back of your head or probably subconscious, it just comes to your conscious mind and you end up discussing with your friends. Okay, there are things maybe you wouldn't be ready to discuss in a normal state, but I think just the essence of the aura that you're sitting near a beach and then it's just so quiet and peaceful makes you talk a lot more deeper stuff. So yeah, so I do not like beaches at all because I feel like it just makes me feel sad. So I'm more of a mountain person. So if you ask a cliched question, mountain or beaches, I am mountain person. And I'm not going to say insignificant and stuff. I just feel like you see when you stand on top of a mountain, especially, I feel like you see there's so much to uncover within the world that you have not explored, and it makes you feel like, hey, I want to see much more. Because I think as kids we all have done that. Okay, you stood on one top of a mountain and was like, oh, what is that on top of the other mountain? You always look at the other mountains, but you don't know what they are. You always feel like you want to explore more. So that's my take, that I want to see more makes me feel like only on the mountains, not on beaches. Okay. यार दोनों में कुछ ना कुछ मिसिंग है यार. देखो बीचेस पे चिपचिप रहता है एंड द वाटर इज सॉल्टी एंड माउंटेन्स पे ठंडी रहता है.
तो परफेक्ट तो दोनों नहीं है, और तुमको इनसिग्निफिकेंट फील करना है तो यू गो टू न्यूयॉर्क, लुक एट द टॉल हाई राइजेस एंड you'll feel insignificant. तो I don't know, yeah, but if you don't have an option, then yeah, mountains So are. what is the ideal, like if you had to pick one destination for traveling, what would it be? Any beach, any mountain, or any city, or none of the above? Some water thing, not necessarily a beach, but kuch to water vacation. It could be like a pond, lake, anything, but water activities, ocean activities मेरे को सबसे ज्यादा पसंद Okay, very fitting with the background. है. So US में कितने water activities किए अब तक? स्कूबा ही नहीं किया यूएस में, बट बाकी तो हम लोग काफी कर चुके यार वाटर एक्टिविटीज. अभी बॉस्टन के पास एक वी वेंट टू केप कॉड व्हिच इज एक्चुअली अ बीच, बट वी डिड नॉट गो देयर फॉर अ बीच बिकॉज ऑन द वे उधर ऐसे एक फॉरेस्ट जैसा था. we just saw cars and we had read in the paper कि यहाँ कहीं तो there is a small pond which is unexplored, so we just went there और we parked the car in ऐसे side forest के side में, or we just went inside and there was actually a pond with just 2 or 3 more people there, and it was Nice. clear water, बहुत beautiful था. नहीं, एटलीस्ट यूएस का मेरा तो भी एक्सपीरियंस वही रहा है. जो भी वाटर बॉडी के पास में गया हूँ, आजू बाजू वेदर बहुत प्लेजेंट रहता है, गर्म रहता है. जैसे तुम पानी को टच करो, इट इज एट लाइक 2 डिग्री सेल्सियस और समथिंग लाइक दैट. और थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो फ्रीज हो जाएगा लेवल पे पानी रहता है वो, नो मैटर इफ इट्स समर और विंटर. तो इसलिए मैं यूएस में तो भी ज्यादा पानी में उतरा नहीं. बट yeah, I mean, it is definitely an interesting perspective. अभी वल्लभ का बहुत स्ट्रांग ओपिनियन था बीचेस पे, इसलिए आई थिंक 15 मिनट से बीचेस पे चल रहा है अपन लोग. सो सर्वेश, care to bring any diverse opinions into this chat? हाँ, देख मतलब जैसे निकिता ने बोला कि बीचेस में भी थोड़ा फ्लॉज है एंड माउंटेन्स में भी फ्लॉज है. मेरे लिए तो आइडियल ट्रैवल डेस्टिनेशन वो है जहाँ अच्छा खाना मिलता है. क्योंकि मैं गया था अभी सिक्किम लास्ट 2-3 मंथ्स अगो, एंड यार वहाँ पे सब चीज में गोट और चिकन और बीफ यही सब हो रहा था. मैं बोला यार क्या खाऊं, मैं क्या खाऊं. एक अग्रवाल्स मिल गया मुझे वहाँ पे. हाँ, यहाँ पे जाके मैं छोले भटूरे पेल रहा था दिन रात बस. सो खाना खाना इज माय मतलब मोटिवेशन फॉर ट्रैवल अभी एट दिस मोमेंट अभी. एंड हाँ मतलब फिलहाल तो ट्रैवल रेस्ट्रिक्टेड है मेरा, बट मोस्टली यूट्यूब वीडियोस देख के मैं खुश हो जाता हूँ कि हाँ यहाँ ट्रैवल करना है मुझे, एंड यहाँ जाके ये कबाब खाने हैं, ये खाना है, वो खाना है. बट या इंटरेस्टिंग. तो ऐसे फूड वीडियोस देखता है या फिर ट्रैवल वीडियोस देखता हाँ, ट्रैवल प्लस फूड वाले बहुत आने लग गए ना आजकल कि आज हम पहुंचे हैं सो एंड सो सिटी के सो एंड सो सेवई वाले के पास, एंड फिर वहां पे वो सेवैयाँ तल रहा है और फिर उस पे वो फिरनी विरनी ये वो सब सही लगता है. आई मीन है? इंटरेस्टिंग. एटलीस्ट इन माय केस फूड के लिए तो मैंने कभी ट्रैवल नहीं किया होगा, और मे बी वेरी फ्यू इंस्टेंसेस जहाँ पे तुम एक्चुअल स्पेसिफिक कुछ खाने के लिए जा रहे हो. बिसाइड्स दैट फूड बहुत ऐसा सेकेंडरी और टर्शरी चीज रहा है मेरे लिए. इट्स लाइक जहाँ पे घूमना है, जहाँ जाना है जाओ, बट लाइक और खाना जो मिले खा लो, बेसिकली दैट्स इट. I feel Find it. something local, find something cheap, and that's enough. Like I think it differs with people, just like what Sarvesh was mentioning. I think he's a foodie. So I have traveled with my brothers who are actually foodie. And recently we had been to Amritsar and Dalhousie and McLeodganj. So my perspective of that trip was I want to explore as much as I can, but I also want to eat in pretty cafes and try new kinds of food and not stick to the authentic. But I have brothers who have literally been just checking out what's the famous food of that area, and they just want to go eat morning, afternoon, dinner. That's it. That was their plan. And they just want to sit and enjoy and not break their head about it. So I think it depends on the person. But yeah, the more you travel, you kind of get to eat different kinds of cuisine, which you may not have eaten.
And if you don't, I feel like you also regret, just like what they say, you know, when you are in Rome, be a Roman. So I think when you go to new places, might as well just not crib and cry, because you cannot go to, you know, Germany and then tell them, I want masala dosa, make it the authentic South Indian masala dosa or anything within, you know, Nagpur kind of a food or anything. You cannot expect them to do it. So might as well enjoy their cuisine because when you come home, you're going to eat what you have to eat. यार I लेकिन mean, so तो I don't know about others, but US में मैं तो everywhere I go, I am also like I would want to be a food blogger. I actually wanted to be a food blogger as a teenager. मेरे को बहुत पसंद है, मैं भी सर्वेश जैसे ही हूँ. But US में wherever I have been, I have always looked for Indian food क्योंकि वो replaceable ही नहीं है. तो पता नहीं. हाँ, एंड वो एक्सपीरियंस बहुत दिनों तक रहता है, मतलब साथ में। मैं बचपन में गोवा गया था एंड अपने को क्या वो स्टार फ्रूट वगैरह तो अभी मुंबई में हमेशा मिलता है, बट नागपुर में कभी बचपन में देखा ही नहीं था एंड वहां पे जाके खाया मैं एंड पागल हो गया। तो जब नागपुर आया तो स्कूल में सबको बता रहा हूँ, अरे मैंने वहां पे स्टार फ्रूट खाया, इतना एपिक था, इतना एपिक था, मतलब सेंटर शॉप कुछ नहीं है उसके आगे, ऐसा वैसा सबको पूरे स्कूल में फैला दिया मैंने कि मतलब स्टोरी उसके ऊपर। सो दैट एक्सपीरियंस ऑफ जो तुमको मिलता है फ्रॉम डिफरेंट cuisines व्हेन यू ट्रैवल एंड देन शेयरिंग दोज एक्सपीरियंसेस विद अदर पीपल, वो एक सही मतलब मजा आता है ये सब करने में। तुम लोगों ने किया है क्या कभी नागपुर में? मैं और डोंगरवार एक दिन सुबह 5 बजे उठे, कॉलेज की बात है, हम लोग सारे पोहा स्टॉल्स गए एक दिन में. वी गॉट पोहा एवरीवेयर एंड बेसिकली रैंक्ड इट फॉर आवरसेल्व्स. And then we made like a proper album of photos, but then that album got lost. But तुम लोगों ने किया है क्या कभी ऐसे इन नागपुर में पोहा रेटिंग या कुछ और रेटिंग? पोहा रेटिंग, that sounds interesting, but हाँ हम लोग ने अभी इतना like that sounds quite dedicated effort honestly, कि जो तुम लोग ने किया like एक दिन में or a weekend whatever, जैसे over a period of time. I guess इतना methodically तो हमने कॉलेज में कुछ भी नहीं किया है, like I guess honestly नहीं, मतलब हाँ मतलब there were odd instances जहाँ पे हमने food pranks बहुत सारे किए, but ऐसे जाके ऐसे अलग अलग जगह पे खाना तो नहीं किया. But मेरे हिसाब से तो यही है, केशव इज द ओजी पोहा वाला। ऑलवेज। I actually would second that. हाँ तुम लोग राधे मंगलम के सामने वाला कभी खाए हो क्या? ओ, मंगलम, राधे मंगलम के सामने तो वो है चिराग का चस्का समथिंग। हाँ वही ना, केशव तो वही क्या? केशव तो मेरा भी फेवरेट है, लेकिन हाँ मतलब वेरी क्लोज सेकंड फेवरेट इज दैट राधे मंगलम वाला स्पॉट. दे हैव अ लॉट ऑफ टॉपिंग्स. तो नेक्स्ट टाइम यू गो ट्राई दैट. हाँ but I guess थोड़ा इसको broaden करने के लिए, and maybe possibly Nandita is feeling a bit excluded if she has not visited Nagpur. What is your OG place to visit? Like, अगर if you have tried a food and you would want to go back and have something, what is your thing? अगर if you're just going back to eat something, what would that be? Okay, I'll answer one by one. I think I have visited Nagpur and Vallabh made sure that he took me into those places where you eat chaat and also where you eat Okay, that's great. all the, through college. So yeah, I'm sorry, I do not have any famous places in Nagpur that I want to pick up. But yeah, I think McLeodganj, there was a place called Tibet Cafe, and the fruit beer and any food that you have tried over there, it's the best cafe that I have gone till date out of all the things. And the second place that I actually miss going is Nairobi in Kenya, only because of fresh fruits and green vegetables. Like the way they had like green vegetables, and it's so fresh, literally from I know here we all talk like, you know, it's fresh from farm and stuff like that. I don't think so. Nothing can beat Africa with respect to fresh fruits and vegetables. So yeah, anything that's quite a long within journey Africa. to get fresh food. Yeah. हाँ जी, श्रेयस जी बोलिए. But I think what Nikita and Dongara said, I think that's a very typical Nagpuri thing to do. क्योंकि नागपुर में if you are roaming around at night या early morning तो पोहा ही मिलता है, तो probably ranking नहीं कोई नहीं करता, but that sort of thing. Just going back to what let's say even Nandita and Sarvi said, I think when you travel with people, like, you find out
what their core thing is. So what you said, Nandita, like beaches make you feel more, and their Sarvesh cares about food. So that is their core thing. So that's why I like traveling, because in normal times, like जब तुम लोगों से मिल रहे हो in their comfort zones, they are in their own routines. But when they're traveling, they show who they really are. Like किसी को नहीं हो, like I have traveled with people जिनका अगर वेज फूड नहीं मिला तो दिमाग खराब हो जाता है. Or I've traveled with people जिनको, let's say, if everything does not go to plan, they panic a lot. So I recommend this to everyone. Like if you're going to get married to someone, so do travel with them like a lot before, because you can only pretend on so many dates, right? But when you're traveling with them, when you're living with them non-stop, either living or travel, I think not just relationships, even friendships, like you get to know the person really well. And I don't know, for some reason, I feel beaches or mountains, so um, people people become their true self. Like they don't feel कि अभी हमको काफी लोग देख रहे हैं. And if you're traveling with people you know well, right? So people get really friendly. And it's a normal Saturday night at a bar in a city compared to any weeknight on a travel. Like people just open up a lot. And I think that's why I think travel is important, because we get out of this normal daily routine that we have, and we feel okay ये 7 दिन तो we are not in a normal mode कि अच्छा आज का दिन बस गुजारना है. We feel ये 7 दिन तो पूरा enjoy करना है. And I feel ultimately the way we are in travel, if we could be the same way in life, I think then we are fully enjoying life. So that's why travel ज़्यादा करना चाहिए, so that you realize कि life is not meant to be all Monday to Friday 9 to 5 and all. Wherever you go, but you should just travel, keep traveling, and not just on birthdays, Vallabh, all the time. So हाँ but मतलब yeah. कमिंग बैक है कि जब श्रेयस ने वो बोला कि इन टर्म्स ऑफ बीचेस या माउंटेन्स आई रियलाइज क्योंकि सर्कलिंग बैक टू द प्राइमरी थिंग आई थॉट आई वाज ऑलवेज अ बीच पर्सन या ऐसा कुछ मुझे बीचेस बहुत पसंद है बट देन अभी एज आई हैव ग्रोन लाइक क्योंकि फैमिली के साथ काफी सारे बीचेस जाना हुआ था सेम थिंग आई रियलाइज कि इट्स वेरी मतलब आई एम लाइक ओपन टू ट्रैवलिंग ईदर प्लेसेस जस्ट दैट काफी टेम्परामेंट एंड मूड पे है. The only thing for me about beaches is like the beach should be clean because I've seen so many bad beaches or as I've grown up like being staying in Bombay for a bit then in New York और मतलब list of bad beaches is phenomenal तो इसलिए मतलब अच्छे beaches is one thing and then I guess I'm open to traveling anywhere but एक significant change I've noticed like in traveling expectations I would say is like पहले there was a lot of rush for doing a checklist kind of a thing वो सब करना रहता है but I think so that part of me irrespective of a beach or a mountain वो थोड़ा सा कम हो गया like maybe I still want to explore places when I go but it's not like कि ये करना ही है मतलब I now prefer more like जो हमारा ऐसे lost travels हुआ करते थे like a bunch of us did a lot of us did travel to a lot of places together तो उसमें ऐसा था कि one of the most memorable days of the trips was like where we had planned a lot but nothing went to plan and we just got lost and it was like a fun day in general like मतलब just walking around moving around तो मतलब कई बार ऐसा होता है कि वैसे ही like plan करते करते कई बार चीजें don't go to plan and if you just enjoy just traveling around wherever you are in the vicinity wherever you plan to be it is kind of fun just to be there I feel मतलब over a period of time. I have an incident to share because Akash, you spoke about like lost travel, okay? And this includes Vallabh. So, so You I have also to have bring that. it up. Yeah. So one of our friend was getting married and he was getting married in a place called Akola, which is in Maharashtra. And obviously, until we met him in MBA, we didn't know where Akola was. And only after coming to Nagpur, I realized, oh, we have to travel like another 3 to 4 hours. And just like what Shreyas said, I think that's the first time I realized that Vallabh does not like trains. He hates trains and he didn't want to do a train journey. And I am more of a train person than of a bus person. And he was the exact opposite of it. So while going, I think we were smooth and we had discussions about ki third AC karna hai, second AC karna hai, first AC karna hai and all of that. But anyways, and I realized some people, they just go with the flow. And the reason why I'm saying is I was traveling with Vallabh and the bride's friend. And I've sent them tickets and I'm literally telling them, guys, I'm going to book third AC. And you people know Maharashtra. So you tell me, the crowd is good or can we just go ahead and book? Vallabh being Vallabh and that girl being the girl, they have not opened their tickets and they have not checked whether it is third AC, second AC, anything. They just said, yeah, theek hai na, you book na, everything is fine, let's go. But the moment we went in, Vallabh says, ki yaar, tune third AC kar diya? I told you to book first AC na. I was like, bro, you didn't tell me this. And that's when I realized, ki acha, Vallabh ko third AC is not okay. He has to go in first AC or maybe he didn't like the train on the crowd that didn't happen.
So that was one part that I realized. While coming back again, I have booked tickets, I have shared it with him. He's obviously not bothered to check the tickets. And we realized the train is not stopping in Nagpur. It is stopping somewhere in some city, which is like some 2 hours before Nagpur. Now we got down and we realized that only after getting into the train. And Vallabh also realized it. Oh, he made a mistake by not checking it. Nandita is new to Maharashtra and to Nagpur. I should have taken that ownership, which he didn't. Now, anyways, we got down in the city. We don't know how to come back. And I remember we called a few of our friends, found out where the bus stop is. Then we went to the bus stop. We got into some random bus, and I hated Maharashtra's buses that day. I'm sorry to say. But yeah, being in Karnataka, I know like you have Airavat and stuff like that. The bus journeys are so comfortable. But in Maharashtra, it was just typical old buses. And I didn't know it was from, like, I can't even call it like a tier 3 city or a town. Maybe we actually traveled from there. We got down in Nagpur and then we took an auto to reach a place where we can eat food. So I think that day we have traveled like in all modes of transportation, from car to train to auto to, and we've even walked midway. So I've realized like a lot of things, but that entire journey, because it didn't go as unplanned, we had like so much time to talk about each other's life and to get to know so much about each other. So I feel like with those kind of journeys, like you feel like you know your friend, but then you also get to know different sides of your friends or like anybody for that matter, right? So yeah, that was one funny incident that happened with Vallabh. Yeah, I think I agree with Nandita. Just like quizzing with Vallabh, we should also start a series called Traveling with Vallabh and not invite Vallabh to it, I guess. So will be a lot viral series. But I think Shail also is a new face. So just introducing Shail. He's Yes. again another NRI. I think he also has he has a few interesting stories about Vallabh. And Vallabh, you know the No, rules. I have more interesting stories with Shembekar, so I'll go with that. Oh, Shemekar wale I'll give you a stories से I chance think. to Vallabh. I'll give a chance to Vallabh to counter with the attacks that has happened on him. कुछ बोलना है क्या तेरे को? शैल एक ही दोस्त है मेरा, मेरे को पहले तो ये बोलना है, बाकी सब साले सांप है यहाँ पे आके मेरे को ही डस्सू साले. बट या मैन नहीं, मेरे को बस वो बोलना है कि वो ट्रू था यार, मैंने नहीं देखा और मैं नहीं. सो द ट्रैवल पार्ट ऑफ इट, आई लाइक गोइंग प्लेसेस, आई डोंट लाइक द जर्नी. लाइक वो सब कौन करेगा यार, वो ट्रेन बुक, होटल बुक, ये बुक, वो बुक. आई कंप्लीटली अग्री टू ऑल द चार्जेस फ्रॉम दैट फ्रंट. नहीं करता मैं नहीं देखता. मेरे को पता है इतने साल से कर रहा हूँ मैं, फिर भी नहीं देखता. नॉट अ बिग प्लानर, नॉट अ बिग ये. At the same time, completely opposite to what Shembekar said, I am still that guy, man. I am the tourist. मेरे को अगर एक जगह जाना है तो मैं वहां पे जितना देख सकता हूँ उतने टाइम वो देख के जाऊंगा. एंड आई हैव अ मस्ट हैव लिस्ट. लाइक अगर मैं जैसे अपन आई थिंक वी कैन डिस्कस ऑन अंडमान अ बिट. बट अंडमान में जब अपन गए थे, आई हैड वन पर्टिकुलर थिंग कि मेरे को राधानगर बीच जाने का है क्योंकि वो बेस्ट है, और मेरे को वो जेल जाने का है जहाँ सावरकर थे. तो मेरे पास दो मस्ट हैव थे, उसके अलावा बाकी सब कुछ वॉज अप टू यू. और मेरे को स्कूबा डाइविंग करना था क्योंकि मैं बहुत ही डरता हूँ उससे, फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, क्योंकि पानी अमावस्या का जन्म है. तो होल पॉइंट वाज कि देयर इज अ चेकलिस्ट एंड दैट चेकलिस्ट नीड्स टू बी डन बिकॉज आई विल टेल यू माय जस्टिफिकेशन फॉर इट, कि मैं उस जगह में पता नहीं फिर से कभी आऊंगा कि नहीं. सो मेरे लिए वो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मैं वहां गया और मैंने वो चीज नहीं देखी जो मुझे देखनी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सबसे फेमस चीज देखनी है, बट जो मुझे पर्सनली देखनी है. मे बी देयर आर पीपल हु गो टू अंडमान जस्ट फॉर द बीचेस, बट आई पर्सनली लाइक हिस्ट्री. सो आई वांटेड टू सी द जेल, काला पानी, इतने लोगों को सजा हुई थी वगैरह वगैरह. तो I mean, that is something which is historically significant to me. And in that case, I need to see it. It may not be the most famous place, but I will not visit Andaman maybe for a big amount of time. Maybe say 10 years from now, 10 years is the optimistic estimate for Andaman. क्योंकि देख लिया ना आपको, वो भी एक पॉइंट है. We have seen it. Now you need to go back, right? And yeah, that's it. I think शैल को पॉपुलर डिमांड से ये बोला जा रहा है कि फोटो डिलीट कर वगैरह वाले टॉपिक लाया जाए. मैं बोलूँ, मैंने शैल को मेरा अच्छा दोस्त बोला है, so I would hand it over to him. हाँ, I think मैं फोटो डिलीट पे 1 मिनट के बाद आऊंगा, बट आई विल कंटिन्यू दैट टॉपिक. मैं भी लाइक कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं जो देखना है. आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मेरे को फ्रिज मैग्नेट चाहिए रहता है. ये शेम्बेकर नालायक की वजह से आई डिडंट गेट ग्रांटेड उनका फ्रिज मैग्नेट, ये ऐसे हैबिट्स की वजह से.
तो नहीं ऐसे like I think some of the things are important and you just need to collect and you don't know कि you when will you go there next. Same cities के बारे में, mountains, like any place, like you might go to Goa like a bunch of times, but like many of these places like you'll go once in your life and you'll experience many of this like once in your life. So I think you need to bring back memories. So you need to take pictures. Pictures is important. Fridge magnet is important, and all of these are like souvenirs are very important. I think मेरे लिए travel में I think I'll come back to the beaches versus mountains का topic. Mountains life के phase पे depend करता है मेरे को लगता है कि ऐसे mountains were important when I was in Delhi because you take a overnight bus and you go to Himachal and then Himachal में जाकर there's like huge amount of mountains available to you. But then like when I left Delhi, I realized that you need water body very near to you. When I moved to Chicago, there was like a huge Lake Michigan, and I was like, how did I live without having a near like water body nearby? I think that started mattering more to me. And then when I moved to like Bay Area, then I realized, oh, city matters to me more. Chicago was much better city than like whatever Bay Area has to offer. And then I like New York much more than Chicago because it gives me the like all the memories that Chicago gave me. And like isliye then cities matter to me. And I think you miss the things that you have seen before a lot, but it changes a lot over time as well. So now it's like Bay Area has everything to offer. It has mountains, it has beaches, it doesn't have the city, and that's what I miss the most. So like yeah, the grass is always greener on the other side, as Shemeka is saying. So I say it's everything is good, but it changes a lot. And I think sometimes you like traveling with friends, sometimes you like traveling just for photography. I think I realized like if you're traveling alone, I usually prefer not to travel to like a nature park, mostly to the cities area where there are people. Sometimes it's just not safe. And I have one example for that, which I'll talk about in a second.